Okay, hi. We are live. Thank you. Hi everyone. Welcome to TechMaestro. Hi Manas, Harshit, Abhishek, Deepak, Jay Ganesh, and Sanjeev. How are you guys doing? Hope you guys are doing fine. First of all, I am Karan, and thank you so much for joining TechMaestro's live. And this is our day 23 of 75 days challenge. And congratulations to every person who has been consistent so far. So if you know, there's a very well known psychological fact that if you do something for 21 days, the chances that you will do it long term increases a lot. So since we have way past that limit, and we have basically cracked that limit of 21 days, right? Today is 23rd day. So we have been through that, and I hope all of you who have been working on this coding challenge from last 21 or 22 days, now you will be consistent throughout 75 days. In fact, more than 75 days, you will take something out of it beyond the 75 days challenge. And I hope that you guys actually use this challenge to stay consistent and basically get better at coding, and in fact any technological or non-technical skills development as well. And before we start, if you have not done it yet, please click on the subscribe button and click on the bell icon so that you get notified about all the videos that we put, and you get to learn along with everyone else. So, guys, how did you find today's questions? And I was looking at it, and they're actually really good. And a lot of them, a lot of the questions were very well or needed really good amount of understanding. So, I hope you guys liked it and you were able to solve it. Hi, Smith. Hi, Vipul. Uh, Hi, Surbi. And one thing, like Surbi is being able to do these questions pretty quickly now. I see like that Akash. There was a time when Akash used to just. I used to wake up here in my time zone, and Akash would have already messaged. Now it's Surbi versus Akash all the time. So I am very happy to see that sort of competitive thing. Plus the fact that you guys are able to solve this question very easily slash quickly is also really good. So without any delay, let's get started with first question. Let me start sharing my screen. So the question that we have is the first question that we have is flatten a multi-level doubly linked list. As Sanjeev mentioned, he enjoyed doing this question. And how many of you were able to solve this question? And how did you solve this question? Okay, Harshit did it. Surbi did it. Sumit also did it using stacks. Okay, Manas also did it using stack. Okay, Harshit did it. Surbi did. If child not null, used recursion. Harshit used recursion. That's good. So basically, this question is nothing but a depth first search kind of question. And although even if you don't know what depth first search is, all you need to do is like every other person is mentioning. Whenever there is a child, just go and explore that child. That's all you need to do in this. For example, here 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8, 9, 10, 11, 12. Right. So if you looked at the answer of this, because of the lack of space in screen, I just cut that. But the answer of this is basically 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 9, 10, 4, 5, 6. So basically, the question itself says whenever there is a child, you have to basically fit it after the node. So 1, 2, 3, after 3, 7, 8 will come. Now 8, since 8 has child, 11, 12 will come, and then 9 will come. 9, 10, and then 4, 5, 6. Right? So basically, this is the question. And to achieve this behavior, we have to use something like a recursion or a stack, because you need to keep a track ki I was at 3, next is 4. Somehow have to know or understand ki when my entire child of 3 is done, where do I need to go back to, right? So that is why recursion slash stack is useful in this kind of question. Secondly, same is with 8. When my I am done exploring child of 8, 11, 12, I need to know that I need to go back to 9 again, right? So this is important.
So this is how we use stack here. So overall, basically this type of this type of going into child whenever you expose it, or whenever you are able to figure out that this node has child, is called depth first search. This is a very important and a very basic algorithm, and we will cover this in much more detail in the further days ahead. But just to give a just again, basically you start exploring, and whenever you find a node that has child, you just go to that child and start exploring that child, and start treating that child as the new node. That's all you need to do. For example, here, first we will start from 1. Does 1 have any child? No. 2, 2 has any child? No. 3, 3 has any child? Yes. I will print 3 or add 3 to my result, and then go to child. Now 7. 7. Does 7 have any child? No. 7 is added to the result. Go to next. 8. Does 8 has any child? Yes. Add to the result. Go to child. 11. 11 has any child? No. 12 has any child? No. I am done exploring this. So I need to return from this list. I go back, my control go back to 8. I go to next. 9. 9 has any child? No. 10 has any child? No. Go back, my control go back to 3. Then 4, then 5, then 6. Is this clear? Like, is this clear to everyone, or is there someone who does not understand this? Guys, quick yes, no. Okay, nice. Since this is clear, let's jump into the code part and let's see how the code looks like for this. So basically, the code is this. What you do is, if you see, I have written an additional function. This is the line number 51. Line number 50. Yes, 51 is the main function. We get a head pointer and we just pass it to a recursive function. You can actually use stack as well, but recursion is much more easier. So what we do is we go to that. First, we check if we have reached the end. If we have reached the end, we just return null. That's it. We don't have to do anything. Now, if I have a child, I explore the child first. Then all I do is just explore the child, same exact thing. You will see. Then go to the next node. Then basically keep ptr equals to head and just return. That's all you need to do. Is it clear, like why this will work and all? Like, is the code clear and all? A quick yes no, guys. This may be overboarding. This may be like, you may feel like this is not a very easy code. If that is the case, I can understand. I can go back and try to answer it more, like explain it one more time. Is it clear for everyone, or do I have to explain it for someone? Because if it is not clear, let me know, because this kind of code, this recursion DFS code, is going to be very widely applicable in future days. Okay, since this is clear for everyone, let's move to the next question in that case. So the question number 2 that we have one person who wanted to explain. Okay, Abhishek, basically what we do here is, like I said, first we explore the we explore the child first, then we go to the next. That's all we do, right? So what do we need to do? We basically need to flatten the list, and we have to do it in place, right? In place करना है. अगर आप देखोगे तो same head में return कर रहा हूँ, right? Same head में return कर रहा हूँ. So what I do is I flatten for this head. I pass it to this function. ये utility function लगा लो, या फिर मैं, since मैं main function को नहीं छेड़ सकता, मैंने नया function बना लिया, right? So now what I do is, if my head is null, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सपोज करो 12 के बाद मैं यहाँ पे आ गया, नई 12 डॉट नेक्स्ट क्या होगा? नल. तो मैं यहाँ पहुंच गया, तो मेरे को ये वाला पर्टिकुलर स्टैक एंड करना है, दोबारा से नए से स्टार्ट करना है, या फिर नेक्स्ट पे जाना है, राइट? तो नल रिटर्न कर दिया. नाउ इफ माय हेड हैज अ चाइल्ड,
तो मैं उस चाइल्ड को एक्सप्लोर करूंगा पहले। कैसे? अगर आप देखोगे तो मैंने एक नेक्स्ट स्टोर कर लिया है यहाँ पे लाइन नंबर 22 पे, क्योंकि मुझे वापस से इस पॉइंटर पे वापस भी आना है, राइट? सो आई गॉट दिस नेक्स्ट। नाउ हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड डॉट चाइल्ड। यहाँ पे 3 का नेक्स्ट 7 होगा, क्योंकि रिजल्ट में 3 के बाद 7 आ रहा है, राइट? दिस इज व्हाट फ्लैटनिंग मीन्स। तो 3 का नेक्स्ट 7 है, तो मैंने पहले ही वो 7 कर दिया, और उसके चाइल्ड का प्रीवियस हेड कर दिया। यहाँ पे मेरे को इसको भी पॉइंट कराना है, 7 का प्रीवियस शुड ऑल्सो बी 3। that is the only reason, that is the only way we can flatten this, right? Now what we do is we flatten this। इस पे जो ये लिस्ट है मेरी 7 वाली, इस पे मैं दोबारा से रिकर्शन चलाऊंगा, क्योंकि दिस इज अगेन इटसेल्फ अ लिस्ट, दिस इज नॉट जस्ट वन सिंगल नोड। यहाँ पे 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है, 11 के बाद 12 है, लेट्स से एक और होता, 12 के बाद 13 होता डाउन चाइल्ड में, 13 के बाद 14 होता, 14 का 15 चाइल्ड होता। तो यू हैव टू बेसिकली कीप एक्सप्लोरिंग। So that's why you treat this as a new list and you basically pass this to same। अब आपके पास जो रिजल्ट आया, नाउ यू हैव अ रिजल्ट, यू नीड टू स्टार्ट बेसिकली इस रिजल्ट के नेक्स्ट पे। ये रिजल्ट क्या रिटर्न करेगा? लास्ट ऑफ दिस एंटायर लिस्ट, ये 10 रिटर्न करेगा, यहाँ पे इस केस में 10 रिटर्न करेगा। तो इसके नेक्स्ट को मुझे 4 से पॉइंट कराना है, क्योंकि आई ब्रोक दिस लिंक। 3 का नेक्स्ट मैंने 7 पे पॉइंट करा दिया था, राइट? इफ यू रिमेंबर, हेड का नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड का चाइल्ड। तो 3 का नेक्स्ट मेरा 4 पे पॉइंट नहीं कर रहा है, 7 पे पॉइंट कर रहा है, तो आई नीड टू पॉइंट 10 का नेक्स्ट टू 4। तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। एंड नेक्स्ट का प्रीवियस भी मेरे को पॉइंट कराना है। 10 का प्रीवियस शुड ऑल्सो पॉइंट टू, सॉरी, 4 का प्रीवियस शुड ऑल्सो पॉइंट टू 10। तो वो किया, दैट्स इट। आई कीप डूइंग इट। आई एक्सप्लोर्ड ऑल द चाइल्ड, ऑल द चाइल्ड नोड ऑफ 3। 3 के मैंने सारे चाइल्ड एक्सप्लोर कर लिए। देन आई गो टू द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड क्या है? आई गो टू द नेक्स्ट नोड एंड कीप गोइंग इट। ये यही एग्जैक्टली करना है। Then that's it, that's all you need to do। Is it clear? Like now, Abhishek, is it clear? Anyone who does not understand it? So the next question that we have for the day is copy list with random pointer। I really like this question, and this question get asked a lot as well। So head dot next equals null, then line 23 will throw an error, isn't it? uh, it will not throw an error, right? Head is not null। हेड का नेक्स्ट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और चाइल्ड भी नल नहीं है, तो इट विल नेवर थ्रो एन एरर। संदीप, लाइन नंबर 23 पे तो डेफिनेटली कुछ नहीं होगा, क्योंकि हेड का नेक्स्ट, हेड तो है ही हमारे पास, नेक्स्ट हो सकता है नल हो, ये लास्ट पॉइंट हो, बट हेड का चाइल्ड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइन नंबर 20 पे चेक लगा चुका हूँ। तो चाइल्ड डॉट प्रेव चल जाएगा, हेड डॉट नेक्स्ट नल इक्वल्स हेड डॉट नेक्स्ट में कर रहा हूँ, नेक्स्ट का के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा, वो नल पॉइंटर नल हो सकता है, वहां पे नल पॉइंटर आ सकता है। इज इट क्लियर संजीव? Okay, I think we can go to the next question in that case। So the next question that we have is copy node with copy list with random pointer। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ जस्ट इन केस इफ इट इज नॉट क्लियर टू एनीवन। So the question is basically you have been given a linked list and you have been given and this is a special kind of linked list। There are 2 pointer instead of 1 pointer, there are 2 pointers। 1 pointer is the next, जो कि नॉर्मल अपना नेक्स्ट वाला होता है, एंड द सेकंड पॉइंटर इज रैंडम। यहाँ पे एक रैंडम पॉइंटर भी दे रखा है। वो रैंडम पॉइंटर क्या करता है? रैंडमली किसी दूसरी नोड पे जाके पॉइंट करता है, राइट? ये है क्वेश्चन। आपको इसको कॉपी करना है, मतलब इसका क्लोन बनाना है, एंड डीप क्लोन बनाना है, कि मतलब अगर 1 5 को, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 7 किसको कर रहा है, एक मिनट, 7 कर रहा है ये
नल को शायद, हाँ 7 नल को कर रहा है, तो 7 न्यू में भी नल को करना चाहिए। 13 7 को कर रहा है, 11 1 को कर रहा है, 10 वापस से 11 को कर रहा है, 1 7 को कर रहा है। तो नई वाली लिस्ट में भी वो सेम एग्जैक्ट नोड्स होने चाहिए और एंड सेम एग्जैक्ट रिलेशन होने चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन, एंड दिस इज honestly a really interesting question, and you will see why. Who were not able to solve it, and whoever was actually able to solve it, how many attempts did you take? कितने अटेम्प्ट्स लगे आपको एक्चुअली सॉल्व करने में, इंक्लूडिंग दैट रन अटेम्प्ट, बिकॉज उसमें एरर वैसे ही मिल जाती हैं, बट फिजिकली करने में काफी प्रॉब्लम होती है। Okay, Harshit is saying it took him a lot of time. Okay, Vipul is not able to do it or could not do it for any reason. Then Manas took 2 attempts, Harshit took 3 attempts. Surbi also took 2 attempts. So यार ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं. This is a really good question, to be honest, and it takes a lot of time and a lot of mistakes. तो अभी ऐसा क्यों है? Like you guys have done it, but what is the biggest challenge that you feel in this question? बिगेस्ट चैलेंज क्या है यहाँ पे रैंडम पॉइंटर से? एग्जैक्टली चैलेंज क्या आ रहा है? मतलब मैं नया बनाता जाऊं और पॉइंट करता जाऊं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? चैलेंज क्या है? ऐसा इतना मुश्किल क्यों है ये क्वेश्चन, या फिर क्यों इतने मिस्टेक्स होती हैं इसमें? सो बेसिकली बिगेस्ट चैलेंज इज रैंडम मेंटेन करना तो है चैलेंज, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द चैलेंज? द बिगेस्ट चैलेंज इज, लेट्स सी हियर, यहाँ पे आते हैं। तो आप अगर देखोगे तो 11 1 को पॉइंट कर रहा है, एंड 7 लेट से 1 को पॉइंट कर रहा होता, नल को नहीं, 1 को पॉइंट कर रहा होता। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट माई नोड इज पॉइंटिंग टू अ फ्यूचर नोड, राइट? 7 जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, और जब आप क्लोन करते हो किसी भी लिस्ट को, तो आप एक एक करके क्लोन कर रहे हो. At this point you don't have any future node. Let's say you are at 11, आपने नई लिस्ट में 7 कॉपी कर लिया, 13 कॉपी कर लिया, 11 पे हो. अगर आप 11 पे हो, इसका मतलब क्या है कि आप 1 पे तो कभी पॉइंट करा ही नहीं पाओगे, राइट? क्योंकि 1 अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है नई लिस्ट में. देयर इज नो 1, देयर इज नो 10, right? So the biggest problem in this question is that a random can point to a future node and that is not immediate future node. Future में कुछ कहीं पे भी हो सकती है वो. And since this is a linked list, there is no way to know कि वो future node कहाँ पे है exactly और या क्या है exactly. So is the problem statement clear कि why is this problem challenging? A quick yes no guys. ओके, नाउ लेट्स सी. तो अभी मेरे को क्या करना है? ठीक है, मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सारी लिस्ट बना ली, सेकेंडली फिर जहां पे जो पॉइंट कर रहा है वहां जा जाके पॉइंट कर लिया. तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आएगी? योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज. यू हैव टू डू एन, यू मे हैव टू डू एन सीक ऑपरेशन फॉर एन नोड्स, तो एन स्क्वायर हो जाएगा. सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेंटेन अ मैप कि भाई मैं अपना ओल्ड टू न्यू मैप रखूंगा. लेट से मैं 7 पे हूँ, मेरा नेक्स्ट इज मैंने पूरी लिस्ट बना ली पहले. सेकेंडली मैं आई विल रीइटरेट एंड आई विल कीप स्टोरिंग अ मैप कि मेरा वन वन न्यू से वन ओल्ड कौन सा है. तो जब मेरा सॉरी वन ओल्ड के करस्पॉन्डिंग न्यू नोड कौन सी है, यही मैप बना सकता हूं मैं. नाउ व्हाट आई कैन डू इज बेसिकली जब मैं 7 से 1 पॉइंट कराना है, मुझे पता है कि 1 नया कहाँ मिलेगा, न्यू 1, वेयर एग्जैक्टली इज न्यू 1. I can just directly go and point to that node if I have that in a map, right? Is the like brute force slash space unoptimized version clear to all of you? Ki how will this exactly work? Okay, now
लेट्स सी कि उसको ना कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, स्पेस कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है इस क्वेश्चन में। देयर आर टू वेज टू डू इट। मैं एक अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, एंड सेकंड यू कैन थिंक ऑफ योरसेल्फ। नाउ you have been given this linked list 7, 13, 11, 10, 1. So what you can do is just give me a second, guys. Let me copy paste it again ताकि it's very very clear to everyone. तो बेसिकली लेट्स से ये क्वेश्चन है मेरा, राइट? वापस से आते हैं। 7, 13, 11, 10, 1 अगर ये है तो मेरा, मुझे पता है कि 7, 13, 11, 10, 1, राइट? मैंने सबसे पहले क्या किया, मेरे पास एक रैंडम पॉइंटर है जो 1 का नल पे है, 13 का 7 पे है। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, अपना जो रैंडम है नया नोड जो मैंने बनाया, इसका कॉपी 7 का एक क्लोन होगा 7, राइट? आई कैन पॉइंट दैट टू माई रैंडम ऑफ न्यू, sorry, random of new can point to the random of old. I can access random of old node in O1, right? How do I do it? Node dot random is my that random number, correct? तो बेसिकली मैंने रैंडम उठा लिया, पिक कर लिया उसका। नाउ वी नीड टू हैव अ कनेक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू नोड, राइट? अभी हम लोग मैप में क्या स्टोर कर रहे थे, ओल्ड टू न्यू। वो क्यों कर रहे थे, क्या, ताकि जब हम रीट्रेट करेंगे उस पे तो समहाउ आई कैन फिगर आउट कि इस वाली नोड के करस्पॉन्डिंग न्यू नोड कौन सी थी, राइट? तो आई वाज कीपिंग अ मैप ऑफ ओल्ड टू न्यू, बट इफ यू रिमेंबर वी ऑलरेडी हैव एन एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट रैंडम अवेलेबल इन द नोड, करेक्ट? तो मैं उस रैंडम को क्यों ना यूज कर लूं। मैंने नई नोड से ऑलरेडी पुराने वाले को एक लिंक बना दिया कि 7 जो न्यू होगा उससे करस्पॉन्डिंग 1 पे मैं एक ऑलरेडी एज बना चुका हूं। तो अगर 7 का रैंडम ओल्ड से न्यू पे पॉइंट करेगा तो आई हैव अ कनेक्शन, मेरे पास मैप बन गया। 7 ओल्ड के करस्पॉन्डिंग 7 न्यू ये है, 13 ओल्ड के करस्पॉन्डिंग 13 न्यू ये है, 11 ओल्ड के करस्पॉन्डिंग 11 न्यू ये है, 10 के करस्पॉन्डिंग 10, 1 के करस्पॉन्डिंग 1। नल का स्पेशल हैंडलिंग है ऑब्वियसली। दैट्स ऑल आई नीड टू डू, राइट? व्हाट आई कैन नाउ डू इज, एक बार फिर से इटरेट करके आई कैन ब्रेक दिस। अभी मुझको क्या करना होगा, न्यू डॉट रैंडम इक्वल्स, मेरा एग्जैक्ट रैंडम क्या होगा, न्यू डॉट रैंडम के रैंडम पॉइंटर को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि 7 का रैंडम कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, 7 न्यू पे। लेट से 13 का रैंडम इज 7, है ना? तो 13 न्यू जो 13 है उसका रैंडम कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, इस 7 पे। तो 13 का रैंडम, न्यू 13 का रैंडम 7 का रैंडम पुराना 7, तो मैं न्यू 7, तो मैं अपने आप डायरेक्टली न्यू रैंडम पे पहुंच जाऊंगा। दैट्स ऑल आई नीड टू डू। इज दैट क्लियर? लाइक ये दो स्टेप्स क्लियर है? इनफैक्ट तीनों स्टेप्स क्लियर है? अ क्विक यस नो गाइस। So that's all you need to do. Basically point random of new node to the random of old, point random of old node to the new node itself, not random, just the new node, and just iterate again and break this randomness or this loop by just pointing out. That's it. Okay, let's do one thing. Let me try to explain it. So let's say this is my list, एंड आई विल जस्ट राइट यहाँ नीचे उसका बस रैंडम लिख देता हूँ ताकि थोड़ा इजियर रहे मैनेज करना। लेट्स से 1 का रैंडम है 4, 2 का रैंडम है 1, 3 का रैंडम है 4, 4 का रैंडम है 2, 5 का रैंडम है 3। लेट्स से दिस इज माय रैंडम।
and we will call it n. Sorry, o. Old के लिए o use करेंगे. राइट. तो अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, लिस्ट बनाऊंगा. 1 न्यू लिस्ट बनी. दिस इज माय 1n. 1 न्यू है ये मेरा. नाउ व्हाट आई डू इज आई पॉइंट दिस टू ओल्डर रैंडम. तो यहाँ पे एक कनेक्शन बन जाएगा. इसका रैंडम क्या होगा, 4 ओल्ड. 4 ओल्ड. एंड आई विल अपडेट दिस रैंडम टू 1 न्यू. अभी मेरे पास कनेक्शन बन गया 1 ओल्ड से 1 न्यू के बीच में. बेसिकली 1 ओल्ड और 1 न्यू के बीच में एक कनेक्शन बन गया. देन आई ऐड अ न्यू 2n. आई पॉइंट इसको, इसका रैंडम में पॉइंट कर दूंगा 1 ओल्ड से. राइट. एंड आई विल अपडेट दिस टू 2n. 2 न्यू से अपडेट कर दूंगा. देन माई 3 ओल्ड 3 न्यू बनेगा. एंड इसका पॉइंट 4 ओल्ड पे हो जाएगा. राइट. एंड सो ऑन. बेसिकली मैं अपडेट करता हूँ 1 मिनट में. 4n 5n. दिस इज 2 old 3 old and this becomes 3n 4n and 5n. Now I iterate on these two, this list again, this one list, this list again, and मुझे इसको random को सही जगह point कराना है. तो what I do is new node dot random. ये क्या है, 4 old है. It 4 old है ये अभी 4 old. I have to make it 4 new. I have to make it 4 new. This is my correct answer. 4 new is the correct answer for this. और वो कैसे मिलेगा मुझे? 4 old का random क्या है? 4 new. Right? 4 old का random is 4 new. तो new node dot random equals new node dot random dot random. ये random क्या है, 4 old. उसका random क्या है, 4 new. तो मेरे पास correct आ जाएगा. That's all I need to do. Is this clear? Like, is there anyone who does not understand this for any reason? Does it make sense? A quick yes, no. Awesome. ठीक है. Since ये समझ आ गए, तो let's move on to the next question. Next question that we have is, okay, since this is clear to everyone, so the next question that we have is, this is one of the question that I removed from the list earlier, and we moved on to I moved it to today. Duplicate numbers. So how many of you were able to solve it, or how many if you actually solved it earlier or maybe today, whatever, like it works both ways. It's okay if you have solved it earlier or if you did it today. In the meantime, let me go through the question. So the question given is, you have been given an array of integers, and integers basically is 1 to n. आपके जो integer हो गए वो 1 to n के बीच में ही होंगे, and only one of those number is repeated in the entire array. You have to find that repeated number, and there is a catch. जो हमारे पहले questions, इस तरह के questions थे, उनमें नहीं catch था, is you cannot modify the array and you have to use a constant extra space. पहले जितने भी हमने अभी तक किए थे, सब में हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस, चलो एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ देते हैं, मोस्ट ऑप्टिमल में भी we could have optimized the array, right? So, and why are we doing array question now? We'll see. So the brute force is basically एक set बना लिया या एक map बना लिया, and whenever I encounter a number which I have already encountered, I'll just return the result. We have the duplicate. ये clear है?
What is the time complexity of this question or this approach, brute force approach? Space B. What is the time and space complexity of this approach? Correct. Both are ON. ON space and ON time. सेकेंडली अभी देखते हैं, ऑब्जर्वेशन देखते हैं कैसे इसको बेटर करना है. तो जनरली स्पीकिंग, लाइक आई सेड, वी कुड हैव मार्क्ड इंटीजर एज और इंडेक्स इज नेगेटिव, और उससे हमारा काम चल जाता. बट क्वेश्चन सेज कि ये अलाउड ही नहीं है, कि भाई आप नहीं कर सकते हो. तो व्हाट डू यू डू, व्हाट टू डू? आई थिंक विपुल ने ऑलरेडी आंसर कर दिया है, बट लेट्स सी. Harshit has also answered. Let me go through this in that case. Basically, ये क्लियर है? Is it clear? Is it clear that numbers are within 1 to n? तो अगर मैं उस एरे पे नंबर्स के थ्रू इटरेट करूंगा, लाइक a of I equals, or sorry, iteration basically is a of I. nums of I पे अगर मैं इटरेट करूंगा तो एक इनफाइनाइट साइकिल बनेगी, राइट? बेसिकली 1 से n के बीच में है, और सिंस एक रिपीटिंग नंबर है, एक इनफाइनाइट साइकिल तो पक्का बनेगी. सिर्फ एक ही रिपीटिंग है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास लिस्ट ऑफ लिंक लिस्ट की नोड्स हैं, और एक पॉइंट ऐसा है जहां पे वो वापस आके एक किसी दूसरे से कनेक्ट हो रहा है. इज दिस क्लियर? ये ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इज दिस क्लियर गाइज? अ क्विक यस नो. कि बेसिकली उसको देख लेते हैं, एग्जांपल में ही देख लेते हैं. 1 2 3 2 2, 1 से नेक्स्ट 2, सॉरी 3, देन 4, देन 2, 2 आके वापस से 2 पे कनेक्ट हो गया. लेट्स से इट वुड हैव बीन 1 2 3 4 एंड 2. तो 1, नेक्स्ट 2, देन 3, देन 4, देन 2 वापस आ रहे, 2 पे कनेक्ट हो रहा है 4, राइट? अगर हम इसे प्योरली लिंक लिस्ट की तरह देखें तो एक कनेक्शन वापस आ रहा है, राइट? इसका मतलब क्या है? एक बार वो साइकिल में फंस गया तो इनफाइनाइट लूप में जाएगा वो, राइट? एक सर्कल में घूम रहा है वो. तो इससे हमने कल एक अप्रोच यूज की थी. what was that approach? We solved this infinite loop problem, or a cycle in a loop, or cycle in a linked list problem using an approach. So that approach is basically slow and fast pointer, Floyd Warshall algorithm, or here and uh, I think turtle and here ये भी बोलते हैं इसको, because of the nature. So basically what we do is we keep two pointers. We have a slow pointer and we have a fast pointer. The fast pointer basically moves 2x of the slow pointer. Or I hope you got a chance to take a look at why fast and slow is 1x and 2x. If you did not, go and check that out. The videos are available on the channel, and it explains mathematically why 1x 2x, or when how what exactly is the speed that will work out, or is the correct speed for this. So what we do is we keep a slow and fast pointer, and at a point, since this is an infinite loop, at a point they will definitely meet. And when they meet, they will basically have a, and then basically once they meet, we find the starting of the cycle point, and basically पहले मिल गए, फिर उसके बाद आई मूव वन पॉइंटर इन द स्टार्ट, एंड देन आई व्हेनेवर दे मीट अगेन, that is my starting point. Exact same as cycle in a linked list 2. So let's see the code. Basically if you see, वही exact same चीज कर रखी है कोड में भी. First of all, we try to find a fast and slow. If they meet or not, we try, given the fact that a cycle exists at any cost, so they definitely meet. We try to meet them, or try to figure out a point where they meet, then move slow to the starting, and then दोनों को एक एक करके आगे बढ़ाते हैं, and जहां पे भी वो दोबारा मिलेंगे, we have the result. Is this clear? Like,
And basically, this is your revision of linked list cycle detection as well. Is it clear, guys? A quick yes, no? Awesome. So yeah, if it is clear, I think that's about it. We don't have any other questions. आज का दिन काफी अच्छा thoughtful था. सारे questions काफी thoughtful थे. So it would have been much easier for all of you, especially the people for the people who have been doing it every single day. So it should not be a big problem. And again, I think all you need to do is just stay consistent. I think there is one question that I would like to answer. Can I start today? In my personal opinion, my personal mantra is like, it's never too late. So do, like, don't ask, just start doing it. You don't have to basically ask someone कि यार मैं करूं कि ना करूं, just कर दो. अगर you will totally regret it after 30 days कि यार मैंने ये भी नहीं किया, मैं सोच के बैठा था कुछ और करूंगा, वो भी नहीं किया. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट देन टू बेसिकली थिंक कि करना है कि नहीं करना. स्टार्ट करो, अगर लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ और करना है, वो जब आएगा तो अपने आप दूसरा स्टार्ट हो जाएगा. when you have a better connected better opportunity presented, you will know and you will basically switch to that easily. So it is much easier to basically change than getting started. तो गेट स्टार्टेड एंड गेट बेसिकली डू थिंग्स. उससे फिर आप रेगुलरली आप कर भी पाओगे. उससे बेसिकली आप कंसिस्टेंसी भी बिल्ड कर पाओगे, नेक्स्ट चीजें भी कर पाओगे. यू विल गेट बेटर एवरी डे. तो यस, यू कैन स्टार्ट टुडे एज वेल. And I think that's about it. And again, thank you so much for joining in. And see you tomorrow. Do subscribe to the channel. In fact, even today, around 60% of the people who watch the video does not subscribe to the channel. So guys, please subscribe to the channel and let me know in the comment like what kind of different courses or content do you want me to build, or you can join our community and let me know there as well. And we can I'll try my best to basically provide that sort of you can say courses or educational video, or some person who is even better than me connect with you, someone who is even better than me, and do it. uh, okay, I think that's about it. And if there is any questions, guys, please comment down below, because I actually have very less energy left today. We just had one more live before this session and I had to prepare for this, and I have one more thing to do. So let's just comment down below and I'll definitely reply back. Bye bye. See you in the next video. Bye bye.